Hello, friends. This is your host JP Mandal from JP Mandal Show, and I'm very excited about today. We have very awesome guest, all the way from the great state of North Carolina, and they are back from Janakpur, Nepal, Madhya Pradesh, and today's our guest is Kiran Shah ji family, and her husband Ganesh Shah ji and his son Aditya. So welcome to the show and first of all अहाँ सबके पूरा स्वागत करी छी आई घट स्थापना के दिन छिए बड़ा खुशी वाला बात छै so thank you for giving me time to do this show and just we want to hear from you your story से अहाँ सबके स्टोरी से बहुत आदमी इंस्पायर हेते so welcome to the show किरण जी गणेश जी and आदित्य थैंक यू जय जी हमरा सबके बोलेलो ए शो के लागी आई बहुत ऑस्पिशियस डे छे आई घट स्थापना एंड अपना सुन बहुत दिन से गप करल छले कि स्वयं आबी एंड डिस्कस करी लेकिन आई मौका मिलले आ अहाँ ई टाइम मैनेज के लिए कि हमरा सबके बोले लिए बहुत बहुत अहाँ के धन्यवाद कि हमरा सबके बोले लिए लेकिन आप जे अहाँ कल्चर के बारे में हमरा सबके स्टोरी के बारे में कहै छी तो हम अपना हस्बैंड गणेश जी के इनवाइट करै छी कि ओ किनका बोलथिन तकर बाद में हम awesome सबके नमस्ते थैंक यू जय जी फॉर इनवाइटिंग अस टू द शो बहुत खुशी लागल अहाँ से गप करे में एता हमर सबके हम जही से मेनली अहाँ के पुरनका पुरखौली घर हमर सबके मोहदरी जिला में रहे लेकिन स्कूलिंग जे हायर स्कूलिंग सब जही से जनकपुर में मूव भ के हम सब कैली ओता जही से हाई स्कूल जते ओता पढ़ली लेकिन बाद में जे से इंजीनियरिंग करे के लगी जे से काठमांडू में शिफ्ट भ गेली हम अपना भाई साथे ठीक है बाद में जे से अहाँ के पहले एक्चुअली जानी छी अपना सबके कल्चर में जे से कि त डॉक्टर बनू कि त इंजीनियर बनू से रही ही सपना सब के होता तो वही के थ्रू में हमर सबके हम पहले शुरू में डॉक्टर के लगी एक बार ट्राई के लिए लेकिन इंट्रांस से रही से बहुत टफ रही तो वही के चलते जे से हम कहली नहीं अब जे बेसी में टाइम वेस्ट करे से बढ़िया जे से अपन टाइम के यूटिलाइज करके आ जे हमरा बहुते होय वाला है वही पे चल जाय छी तो हम कैरियर के वही स्विच के लिए कंप्यूटर साइंस में अहाँ के ओतऽ से कंप्यूटर इंजीनियरिंग कैली हम काठमांडू इंजीनियरिंग कॉलेज कालीमाटी में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी अंतर्गत पढ़े है के बाद में हायर स्टडी के लगी सोचली कि बाहर जाए के ही तो बाहर जाए के लगी सोचली कि अब जे से अतः अमेरिका के लगी ट्राई करू वही के प्रिपरेशन करे के लगी जीआरई टॉफेल सब के जे क्लास सब के हल्का लिए के काठमांडू में कोचिंग सेंटर सब में जाके ले ली ते वही के दौरान जे से हमरा महर्षि यूनिवर्सिटी के बारे में मालूम भेल कि ओतऽ जे से बैचलर्स के बाद में मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस करे के लगी जे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अपना सबके उड़ी के आदमी के लगी कॉलेज आ प्लस इंटर्नशिप प्रोग्राम जे से बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहे के लगी अपना सब ओतऽ के आदमी सब के लगी ओते एक्सपेंसेस जे हुई से बहुत हाई हुई अतः के लेकिन अतः सब कॉलेज एक्सपेंसेस पे करके इंटर्नशिप के माध्यम से जे प्रोग्राम है से बहुत सुटेबल रही हमरा लगी बहुत हमरा माइंड में क्लिक कैलक कि हम अप्लाई के के बाद में भ गेली अतः एडमिशन के बाद में वीजा सबके प्रोसेस वही सबके वही दौरान में आदित्य जे रहे से एक्सपेक्टिंग 2008 के टाइम रहे तो आदित्य एनहर एकर हमर i20 ऑल एनहर आदित्य के जन्म भेले त आई काठमांडू में रहे से so basically अहाँ सबके मतलब शादी कॉलेज पढ़ते रहिए तबे भेल हम जे से अहाँ के कॉलेज पास भ गेल रही इंजीनियरिंग जे कंप्यूटर इंजीनियरिंग कॉलेज से पास भ गेल रही ते के बाद में शादी भेल पास होते मात्र 2-3 महीना के बाद में शादी भ गेले वही के बाद में जे से इनहर के शादी भेले तो टाइम में तही टाइम से प्रोसेसिंग रहे कि अत बाहर जाए के ही सब कोई के तेन टाइप के रहे very nice story so this is a perfectly तो अहाँ के ई जे शुरुए से किरण जी अहाँ शुरुए से कंप्यूटर लाइन में रहिए कि गणेश जी के पूरा ई दिमाग लगल कि पूरा कंप्यूटर इंजीनियर से शादी करे के छै किस व्हाट इज द स्टोरी हाउ डिड यू कम इनटू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं आप देखियो कथी हुई कि अहाँ के
हमरा सबके अरेंज मैरिज भेल हब, कोनो लव मैरिज लव मैरिज नहीं केने छी। हमरा सबके मम्मी डैडी सब मैरिज के सब बात सब केने रहे। इंटरेस्टिंग फैक्ट कथी छै कि हम दू आदमी एक आदमी के देखलहुं रे शादी से पहले। हाँ वाह आ रहैत रही एके जगह जनकपुर ने। तो अहाँ कथी कहै छै, अहाँके ई कॉलेज एजुकेशन बैकग्राउंड की छै किरण जी? अहाँ हमर हम छै कि अहाँके आईएससी पास के लिए, आईएससी पास करके हमहूँ जैसे मेडिकल के तरफ सोचलिए, मेडिकल स्टाफ नर्सिंग सब सोचलिए कनिका दिन ट्रायो के लिए, लेकिन ओहि सबमे कोनो में मतलब काम नहीं लगले कि हमरा तो कैरियर स्विच करऽ पड़ले। आईएससी के बाद में बीएड में एडमिशन ले लिए। पापा ओइठा रहथिन हमर इंग्लिश मतलब जनकपुर कैंपस वह रामसागर जे कॉलेज छै हाँ नहीं कौन कैंपस से नामो भी हमरा दिमाग में निकल गेल। कन्या स्कूल में नाइट कैंपस चले छले। आई सी आई सी आई सी। हाँ तो वही में योर स्टोरी इज सच इंस्पायरिंग कि हमरा बहुत आदमी सब पूछे छै कि हाउ टू कम अमेरिका, से हुएवर यू आर वाचिंग, जे सब अहाँ सब देख रहल छियै शो, तऽ अहाँके गणेश जी किरण जी एखन आंसर देलकै है। देखियो कि यदि अमेरिका जाएगा ई से तऽ बड़का बात नहीं छै। अहाँ सब कॉलेज पढ़ै छियै तऽ एहिठाम बैचलर करके एकदम यदि सजीलो तरीका से सस्ता तरीका से आबै लए चाहै छियै तऽ नेपाल में बैचलर करू। तकर बाद एहिठाम बहुत ही कॉलेज छै, महाऋषि जकाँ बहुत ही कॉलेज छै अमेरिका में जे मास्टर्स के लागी स्कॉलरशिप दै छै। ओहिठाम RATA होइ छै, राइट? तऽ तकर बाद यू कैन कम हियर डू द मास्टर, देन अनदर योर डोर इज ओपन, मतलब एहिठाम प्रोफेशनल कैरियर में। तो एहिठाम अहाँ एहिठाम शुरू में लिए अहाँ सबके कते स्ट्रगल करऽ पड़लै? चैलेंजिंग, इट वाज चैलेंजिंग और कि सजिलो छै? बहुत 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 चैलेंजिंग रहे, लेकिन अहाँ के बात के कनिका हम अहाँ के महर्षि यूनिवर्सिटी में आबे के लागी सजीलो कैला है से हम कनिका एक्सप्लेन कर दै छी, तब दोसर व्यूअर सब के सेहो हेल्प होती। वो आबे चाहिए अमेरिका तक। एग्जैक्टली महर्षि यस। यूनिवर्सिटी के लागी जे है से अहाँ के टॉफल GRE के रिक्वायरमेंट जे है से वेव कर देने है नेपाल के लागी। अहाँ अगर बैचलर पास कैलिए, बैचलर पास केला के बाद ने एक बरिस जते जे इंटर्नशिप जैसन काम कैने छी तो बहुत इजी भ जाई है आबे में। कॉलेज जे है से एक्सेप्ट कर लेता है के। आ तक जे वीजा प्रोसेस जे है ने से हल्का सेहो महर्षि यूनिवर्सिटी में वीजा प्रोसेस जे एक्सेप्टेंस रेट जे कहै छी ने सेहो बढ़िया से वीजा दै है कि एतऽ के। कैलाकि मालूम है कि एतऽ के कोर्स स्ट्रक्चर अहाँ के है नहीं कि 8 महीना अहाँ के कॉलेज में रह पड़े है। आ कॉलेज अहाँ के लॉजिंग प्रोवाइड करत, फूडिंग प्रोवाइड करत, आ जते अहाँ के एक्स्ट्रा स्टाइपेंड सेहो दै है अहाँ के पॉकेट खर्च के लागी। तऽ अहाँ के 8 महीना 9 महीना जे अहाँ कॉलेज में छी तऽ अहाँ के पैसा के अहाँ के एको रति टेंशन लिए के जरूरी नहीं है। अहाँ के फुल्ली अहाँ के ओतऽ कवर्ड रही। आ के बाद में जे है से अहाँ कॉलेज से 2 साल के जे हुई से CPT कही, करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उ जे अहाँ के फुल टाइम जॉब अहाँ के कंप्यूटर फील्ड में अहाँ के खोज पड़ी। तब अहाँ के जॉब मिल गेल ते के बाद में जे है से अहाँ के कॉलेज के जे बाकी पैसा सब जे कॉलेज फी सब हुई से सब अहाँ के मैनेज भ जाए। लेकिन अहाँ के एक बारी जे काम मिल गेल अहाँ के अपना फील्ड के, अमेरिका में कंप्यूटर फील्ड में काम मिल गेल तो यू विल अर्न वेल इनफ टू पे एनीथिंग, दैट्स नॉट ए बिग डील। तो उ जे है से अहाँ के शॉर्ट कनिका कॉलेज के बारे में कह दिलिए। स्ट्रगल के बारे में कहबे तो अब अहाँ बुझे सके छी कि अतः हम रहली आदित्य 2 महीना के रही तो अहाँ के हम मूव भ के अतः चलि गेली स्टडी करे के लागी। आदित्य आ किरण जे है से घरे जे है से जनकपुर ने हमरा मम्मी डैडी के साथे फैमिली साथे उत्तर रहले। ओतऽ ओहो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रही बच्चा के लागी, अपन पलल बड़ल भ गेले। लेकिन जे दूर रह पड़ली फैमिली से बहुत कठिन समय रहे। लेकिन अहाँ के कुछ पावे के लागी कुछ तपस्या करे पड़ी है, कहै छी ने, सेहे हमरा सब के लागी तपस्या पीरियड रहे। राइट राइट। सो एक अहाँ बहुत निक बात कहलिए। तो अहाँ एहिठाम कॉलेज खत्म भए के ई सब भेलै फैमिली, मतलब किरण जी? हाँ तो उ जे है से हाँ हमर ई सब हमरा संगे नहीं अइले। हमर कॉलेज जे है अहाँ के F1 वीजा में हम आयल रही अतः स्टूडेंट वीजा में। स्टूडेंट वीजा में फैमिली के लऽ के आबे में जे है से वीजा बहुत गाढ़ो हुई है कि दिए में होता। एक दू बारी हम ट्राइयो करबेने रही एकरा सब के, बाद में हम चलि एलिए त, लेकिन वीजा के जैसे डिनाई कर देलकै ओतऽ। तऽ हम अहाँ के 9 महीना जते कॉलेज में रहली ते के बाद में जे जॉब मिलली हमरा जे कहने रहली इंटर्नशिप वाला, ते के बाद में कहली कि अब हम कमाई लगलिए त तकरा से के बुला ले। लेकिन आई वाज स्टिल F1 वीजा में रही हम की। तो वही टाइम में जे है से नहीं दिल के वीजा डिनाई कर देलकै। हाँ हाँ। तो तब अहाँ H1 में के लिए तकर बाद ई सब भेलै? हाँ ते के बाद में जे H1 वीजा होई में ओहू में जे स्ट्रगले रहल हमरा पीरियड के लागी। कैलाकि फर्स्ट बारी हम H1 पहले सबसे पहले तो हमरा कंपनी में गेली तो
2008 रिसेशन टाइम में हम सब आयल रही अमेरिका में। Yeah, that was a स्ट्रगल के बात करे छी त right financial crisis. So हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस। तै के बाद में अहाँ के 2009 के जे से फरवरी में हम कॉलेज से निकल गेली। right कॉलेज से निकल गेली तो स्ट्रगल के बात रही। तो अब हम ओत अमेरिका में हमरा चिन्हल आदमी कोई नहीं रहा। हम कत जाओ ओत से हमरा रह के लगी ठाऊ नहीं रहे ओत से। त हमरा सन आदमी 4 गो हमर फ्रेंड रहे ओहने के ओकरा जाय लगी कतो ठाऊ नहीं रहा। हम सब चूज के लेकिन नहीं चल सबसे नजदीक शिकागो ही, आयोवा से शिकागो इलिनॉय right नजदीक है। ओत जॉबो सब अपॉर्चुनिटी बढ़िया होते। लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन के चलते एवरी टाइम हम सब अप्लाई करी तो पूछ दे do you have green card? No, I don't have green card. So no, you are not qualified for the job. CPT, OPT वाला सबके लेबे नहीं करे। तो अहाँ के ओत जे स्ट्रगल पीरियड अहाँ के 5-6 महीना जते हम शिकागो में रहली हमरा जॉब नहीं भेटल। हमर एगो रिलेटिव अहाँ के कैलिफोर्निया में रही तो कैलिफोर्निया में मूव भेली। तो जे जॉब हम अभी करे छी तो उहे जॉब हमरा मिलल। उहे से हमरा H1 अप्लाई कैल के ते के बाद में जे है से ई सब अहाँ के oh awesome so now कथि कहै छै किरण जी त अहाँ एठा अमेरिका एलिए त so you are just like a housewife or you're working, how did you get into the software development career? मतलब अहाँ के कथि छले के जर्नी? 2012 दिसंबर 26 के हम आदित्य लैंड भेली कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में। हम तो पहले के मास्टर्स कंप्लीट नहीं भेले। हमर मास्टर पूरे सकल नहीं कंप्लीट नहीं भेले। वो एजुकेशन में रहे इंग्लिश में आ साइड बाय साइड हम कंप्यूटर के सेहो प्रैक्टिस करते रहिए। हम कोर्स सब लेते रहिए नेपालों में। अत एलिए तो आब कनिका दिन तो जाने छी दूरी रहे तो कनिका दिन टाइम स्पेंड केली संगे सब फैमिली। आ तकर बाद में फिर हम पढ़ो लगली इनरोल के लिए तो कंप्यूटर साइंस के लागी वही ठाम कम्युनिटी कॉलेज में कैलिफोर्निया। तो पढ़लिए आ पढ़ा 2 साल पढ़ली। 2 साल पढ़ला के बाद में जैसे दिन कार्यालय 2015 में तब जैसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आके इनरोल के लिए काम। That's awesome. So basically अहाँ सब तो another journey एठा छै अमेरिकन ड्रीम के बड़का बड़ी बात छै कि एठा लोग आबै छै जॉब खोजे छै तकर बाद अहाँ के घर किने छै। तो अहाँ के कैलिफोर्निया में बहुत ही आदमी ऑल ओवर यूनाइटेड स्टेट्स दे वांट टू कम टू कैलिफोर्निया। एठा अहाँ के बहुत ही जॉब अपॉर्चुनिटी छै, हाई पेइंग जॉब छै। तो अहाँ सब लेकिन एठा से which year you guys moved out? मतलब और अहाँ सब के कैलिफोर्निया से नॉर्थ कैरोलिना अहाँ सब गेलिए तो वही जाय के पाछी की छले कारण? गणेश जी तो गणेश जी ओके। तो अब देखिए वह कहली तो ई सब अइली तो अपन ओई टाइम में अहाँ के 3 बरिस ग्रीन कार्ड के एनहर सब मिला के जे लाई गेले टाइम। तो ग्रीन कार्ड भेले ते के बाद अब सेटल होय के बाद अले कत सेटल होबे या घर सर किना के बात भेले। तो चीनो में हम सब रहत रहे कैलिफोर्निया के चीनो में। तो चीनो के स्कूल सिस्टम जे रहे से बढ़िया नहीं रहे। तो वही टाइम में जे है से आ घर सब के प्राइसो जे रहे चीनो हिल्स के आ चीनो में फर्क बहुते रहे। चीनो हिल्स में स्कूल बढ़िया रहे। तो हम सब सोचलिए कि बुआ के स्कूल के लगी तो बढ़िया ठाव में घर सब कीना पड़ते। लेकिन इन द प्रोसेस बुआ जे स्कूल जात रहे वही टाइम में तो चीनो स्कूल नहीं बढ़िया रहे। तो कैलिफोर्निया के चीनो हिल सिटी में एवरी डे जैसे 1 आवर बस में जाए 1 आवर आवे ने लगे। तो बहुत कन्वर्सन रहे कि एकरा लगी। तो वही के फाइंडिंग करे के लगी हमार सबके घरों एक बारी बहुते महंगा घर किन के आ वही के मोर्गेज पेमेंट क के आ वही में लेपटा के रह जाते हैं। हमरा सबके सोच नहीं रहे। हमरा सबके घर में ओते बेसी इन्वेस्ट नहीं क के जस्ट रह के लगी ठाव है। स्कूल सिस्टम बढ़िया रहे, कम्युनिटी बढ़िया रहे ओते चाहिए आ प्लस घर में दवाई से बढ़िया आरो जे है से कुछ एक्स्ट्रा काम सब करी ते के सोच से। हाँ तो वही के दौरान में जे से हम नॉर्थ कैरोलिना मूव भेली जे से एपेक्स नॉर्थ कैरोलिना में ई एरिया के स्कूल सब कम्युनिटी जॉब मार्केट ई सब बढ़िया रहे। आरो हम किरण के कहै छी आंसर देता रहा। आरो मिट्टी की बात के करे छी कि हम सब त मूव भेली त 2-3टा वैल्यू लके एली। 3टा वैल्यू कथि रहे कि ओइ चीनो में बहुत बढ़िया माहौल नहीं रहे बच्चा सब के लागी। ओठम एजुकेशन सिस्टम बढ़िया नहीं रहे। स्टेम के लागी आदित्य तो 5 बरिस से इंटरेस्टेड रहे स्टेम में। तो ओठम ओन अपॉर्चुनिटी नहीं रहे, बहुत ट्रैवल कर पड़े। तो एटा वो वैल्यू रहे कि मतलब एकदम रिसर्च के लिए गणेश रिसर्च केलखिन कि एपेक्स एरिया में केना छै स्टेम के। तो एठम बढ़िया रहे। दोसर अपॉर्चुनिटी दूसरा वैल्यू कथि रहे हमरा सबके कि ओत जाके दुनू आदमी स्टेम में रही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में दुनू आदमी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के काम करिए। तो वही जे एरिया में जाए कि फिर कैरियर जॉब स्विच कर पड़े। जॉब छोड़ के स्विच कर पड़े तो जॉब भेटे आसान से।
ओहि सराउंडिंग एकटा उ भ्यालु रहे। तेसर भ्यालु रहे कि हम कैलिफोर्निया में तो घर बहुत महंग छै, एहन ठाम में जाय हम घर सस्ता होय हम सब अफोर्ड कर सकै छी आ हमरा सबके लाइफ में फ्रीडम से रहे। तीनटा भ्यालु लके हम सब ओते एलिए नॉर्थ कैरोलिना। एंड अभी तक ले तीनों भ्यालु बहुत बढ़िया से फुलफिल भ रहल, बेसी जति Exactly. एक्सपेक्ट So, करके से बेसी। I can see your master move. क्योंकि Yeah. so हम अखन I'm involved in the real estate and mortgage lending industry for last 10 years, and I see कि बहुत आदमी सब इठा कैलिफोर्निया में they spend almost their more than 50% of income just to buy house. Even like अहाँ का loan qualification के लागि बहुत ही आदमी इठा qualify नहीं भए रहल छै। अखन अहाँ कहबै जे चिनो हिल एरिया में तो $1 million से नीचा घर पर बनाना मुश्किल छै। But I think your decision की मतलब दोनों आदमी की first of all you guys did a really good choice of getting in the technology and then finding the high paying job. कि घर किने का और building a wealth through the real estate is two things is very important. One thing is a higher W2 income जे दोनों आदमी अहाँ के जॉब करै छी। दोसर बात छै जे क्रेडिट स्कोर बढ़िया राखू तो दुईटा बात भए गेल तो अहाँ के you can buy house. So अखन अहाँ सब तो I feel that like you guys are right example for the achieving the American dream of home ownership. तो अखन वो एरिया में रियल एस्टेट मार्केट के छै अहाँ सब के मल्टीपल प्रॉपर्टी ओई के तहत अहाँ के अपॉर्चुनिटी छै रेंटल मार्केट के छै। एठा मान लियो कोनो आदमी कैलिफोर्निया से नॉर्थ कैरोलिना मूव कर चाहे छै, what is your suggestion कि और right now the market in North Carolina has gone up. केहन छै अहाँ सब के दृष्टिकोण? एहिठाम हम सब 2016 में मूव भेलिए, 2016 के जनवरी में मूव भेलिए। तभी बहुत नीक मार्केट रहे, तभी यहाँ के 3 लाख के अंडर में 2 लाख में घर भेट जाए। हम सब किनलिए एठाम तो बिलो 4K में 400K में किनलिए घर। तो या ठीक रहे। अभी बहुत डबल भ गेल छै, 6 बरिस 7 बरिस में डबल घर सब के प्राइस डबल से बेसी भ गेल छै, कोनो प्रॉपर्टी के ट्रिपल भ गेल छै। Right. तो भी अभियो छै नीक टाइम, अभियो कैलिफोर्निया से सस्ते छै त कि मूव क सकै छै। एठाम अहाँ के टेक्नोलॉजी सब बूम भ रहल छै, टेक्नोलॉजी फील्ड सब बढ़िया भ रहल छै आ अभियो अफोर्डेबल छै हाउसिंग प्राइस। तो आई थिंक it's better time to move from California to here. That's awesome. So basically there is opportunity for the home ownership, but the biggest challenge I'm finding here मतलब diaspora, Nepali diaspora, Indian diaspora or immigrant diaspora में parenting, like maintaining your high intense job and your career and then parenting and taking care of the kids. And I see I would like to talk about now like Aditya. So Aditya, so how did you get your interest in STEM? And I know through your dad and mom that you have achieved and you have got several awards in robotics, STEM, software development. You have software club. So could you tell our viewers and about you? Who is Aditya Sa? What and is a little bit short by yourself so people know your story. Yeah, thank you. Yeah, so like my interest in STEM is of course through my parents because they're both in that type of industry. Started when I was in California. It was actually just from toys, whenever I played with toys that involved like moving parts. There's this one toy that had like 2 buttons and then it had a motor and everything with like a fan and stuff like that. And I was always wondering how that stuff worked, So through that, my dad bought some electronics kits. When I was like 5 around that time. And through that, me working with him, even though I was such a young age, it was me not by myself. It was me and my dad doing that type of stuff. So electronic kit, which sparked my interest even more because instead of now just me playing with the toys, I was trying to actually make them, even though it was much at a simpler scale, maybe just like a light turning on and off and stuff like that. It was way more rewarding, for me to do that. Following that journey, when we moved to North Carolina, there was a lot of like-minded people, if you can say that, like-minded people in my school, in my my community. So with those people, we met people in the library where we went to like a conference
in the library every like 2 weeks or like 2 months or something. I don't remember fully, but that was like kind of like a STEM showcase thing where people showed their creations and things they made. So we met some people there, which with them we've started a coding club called Coder Dojo Apex. In so I can help people spark interest in STEM like I did when I was young. So we usually have ages 7 to 17 because it's never too late, to start what you like To to learn do. about these, so like Ganeshji, so basically, did you had already in the mind that you want to make your son as a software guy? Because, or he had that kind of a interest, or you put like what kind of things you did? Because if I see a lot of kids, they are they wanna just watch the YouTube, and they don't have interest about mathematics, academics. When I see his profile, Aditya, you are a black belt in Taekwondo. Yeah. And you are, how do you maintain your all these academics, because you must have very competitive your classmates, and in the same time you're finding time to helping other kids to learn about the software. It was a dad and mom put you really very strong discipline curriculum, or this was your personal interest? It wasn't my parents who put me in like under strong discipline doing this. I don't think doing things like I did is very possible if you don't have a self-driven interest to do that. Not to say that you can't, because a large part of what parents do, which I believe, I'm not sure, I'm not a parent, what I believe is like guiding, because they can either spark the interest in you. So sometimes they you don't do what you want to do per se, but once you start doing, you might start liking it. For me, it was mostly self-driven interest, but like through through things they've facilitated, that interest has grown more. On the time management stuff, like how do I do all that, like school and stuff. It's usually just I don't like to like waste. I mean, it's not like to say I don't waste my time sometimes, because there's always the enjoyment. Right. I do go on YouTube, I do play games, I do all that stuff, right? But there's a boundary I set for myself. So I need to finish this. So I'm gonna spend some time here and have some fun, do that stuff too. I mean, it's just a So, part so, of so, being. so what grade you started having this coding stuff? How old were you at that time? Maybe how? So when did you start? First you had interest with the robotics, then you start coding, or first you had coding and then went to the robotics? Firstly, it was robotics because it was like the toys and stuff. But I think near fifth grade or fifth grade, I started doing like more programming related stuff. Like the first like website I made was like a ISS tracker. I think it's still up. I don't know if it's actually working, but it's like isstracker.firebaseapp.com. That was the first website programming web development task I did. What it does, little bit Oh explain. yeah, it's like basically a website where you can track the position of the International Space Station. So I learned about like Google Maps and how to draw that position and APIs and all that stuff, program related stuff. Yeah, it was a great learning experience. Like those projects, and I've done many of those projects that like improved my knowledge. But now I'm more transitioning back towards robotics because I've joined many robotics teams. Like last 2 years ago, I was on a robotics team called No Wheelers, and it was an FLL team, First Lego League, and we actually went to Worlds, or like an invitational international competition, and we got first place robot performance there, which was really good experience for me, because it was my first time going to like one of those types of competitions and experiencing the atmosphere there, which is really nice. So the Ganeshji, so I have a question here. There are many parents here, especially
California, I see that one parent is, making money, bringing the money to home. One parent is just taking the kids to the school, drop off, this come on to that, soccer game, to that, coaching. So how do you guys like both involve in? Do you guys? How did you manage that? With such a wonderful kid, like this. Uh, Did you had a lot to organize it? Or how was your support system? No, so I was very lucky enough to work for a company who was very flexible. वो बहुत flexible रहे हमरा काम करे में. Yeah. So when I was in California, when they came, then when I asked company, okay, I'll work just 4 hours in the office in the morning, and then late 4 hour like afternoon I'll work from home, and I'll also spend time with Aditya. So that helped me a lot. Like remote working helped me a lot, spending time Put the with time in the Aditya. parenting, right? That Yeah, was yeah. And it wasn't because I was delivering work. I was not like trying to say, okay, I'm not working this many hours or this much hour. My work was always like on a high level. It's like Right. I was always working more than 8 hours Right. early in my career, because I had to prove it. I can, because when you meet when you're working with new people, they don't know you. You have to show the work, what you are capable of doing, and that's what I did. And they believed in me, and it's the same company I'm still now. I mean, after I moved from California, I have been working remotely since then. Wow. So you that's amazing. See, so a lot of viewer can they're getting the clue and the strategy how you can. So Kiranji, so how do you still? I feel that you guys are managing the I think the culture identity in the first generation, especially the kids, because kids go to their school here, and in American system is is very different. Is the kids are you able to install our Mithila Sanatan Dharma culture, those things? How what are the activities you do? And they So have the first, same time they have to have interest, right? Because a lot of kids, you say, what is Diwali day? People they have no idea. They will say there is no Diwali day, because there is only Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. No Diwali. But I see, I mean, like during the festivals, how do you like the cultural stuff? What do you guys do as a parent to the kids? I think that is very good question, Jayji. And then, yeah, speaking about culture, so, I am very much into the culture. I do every single thing, what we do in the Mithila culture, right? So like Deepavali, Dasai, and then Jur Sital, right? That is very famous. I also do that. I can make all those kind of preparation at my home. And what we do in Mithila, I do here. And then on top of that, I'm very much kind of, inclined towards the dharmas, and then the how you do like dharmic person, right? So yeah, Right. I'm very much into that. I'm Krishna consciousness. I'm also member of the Krishna consciousness. So when Aditya was small, we used to go to Krishna temple, and then we used to do a lot of seva. So what you say, what you want to see in your kid, you have to do. You have to be role model for the kid. So if you don't do, then your kid will not learn what is our culture and what They is learn the. by the imitating you, like, so that's very 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 good Mhm. point. So Aditya, so like, what is your goal? What is your when you grown up? What do you wanna? What's your dream job, or what is your career? Do you have, or is just you right now going with the flow? It's not very clear, but it's I do want to go to college. Either in state because North Carolina does have pretty good colleges. But or if I want to shoot, I was thinking of shooting to the top, like MIT and stuff like that, to go there. After that, my goal is to like create like a business, to like a robotics business, because I don't want to do what I don't want to be like waking up in the morning and just like, oh, now I have to do this. Like, I don't want to be doing this, right? I want to do what I feel like doing. So that's what I'm trying to build up from now. Because I know if I just stand around doing nothing, that's what's gonna happen, right? So from now, I'm trying to build that foundation up by doing all these activities.
so when I grow up, I can do what I would like to You do. can talk about your business right now. You Oh, yeah. Yeah. So I see like right now you see the trend, right? Like AI and especially AI is playing more and more role in a job. Maybe people are expecting like maybe 10, 15 years, all these coding will be done by AI stuff. The industry is changing. If you go to Tesla, cars are manufactured by robotics. So most of the other industry will follow the trend to. So you think like, what do you think like as right now? You have gone to several competitions. What is the trend and what do you see envision the future down the road? Is the going to AI is take over the world in the especially in the career side, and that will generate Um, like unemployment, and the things will change. Do you have any thought? I mean, yeah, I guess. I mean, the AI taking over the world is like a, like a big thought, but I feel like AI will help people, because right now, like how like Teslas and stuff, there's like autopilot and all that stuff like that, like full self-driving. Robotics are making, like robots are making the cars and stuff like that, with like AI machines. The fact behind that is humans are making the machines, humans are making the AI. So they're, like on all the movies, how the AI becomes smarter than the human and like it like detaches. Right. I don't really think about that stuff because first we have to get to the stage of where we can actually make AI that can actually do that. So that's what I'm focused on in the present. What am I going to actually do? There might be a possibility. Right. So what do you think about this ChatGPT stuff right now? Is there a lot of students are using ChatGPT to do the homeworks, or if people are using the technology to become lazy, or is that technology is making them kind of not working hard and going the shortcut way? What is your experience and what's your friends are doing? Using the technology to do the homework or no? I mean, I have to confess, sometimes, sometimes when pressure becomes high, you have to sometimes, use the tools that are at your availability. The, I mean, I feel like it's a tool. It's up to the person of how they use it. Personally, sometimes I just use ChatGPT to like brainstorm ideas and stuff like that for projects or essays. I'm not really essays, but uh, brainstorm ideas. I don't really use it to do my work for me. But it's usually, I mean, it's a tool. ChatGPT is a tool, right? It's up to the person how they're gonna actually use it. If they're gonna use it to help them, or they're gonna use it to hurt them. It's yeah, that's my Yeah. opinion. Okay. So the Ganeshji, one question is right now this there is big noise and Facebook Meta founder Mark Zuckerberg is betting big time in this virtual reality stuff, metaverse. So do you think the software development is going to go in another phase or another technology is going to be major disruption, or will be more? It's I mean, depends how it's moving, but in my opinion, we can go back in little bit how from manual labor work, how computer industry transformed the society to digital world, right? So when that transformation was going on, people have had the same questions like, okay, computers are gonna take my job away. But in reality, what happened? Computer created more jobs than ever. It did take away some of the Traditional jobs, jobs, right? traditional jobs. If you were doing like data entry task, now you don't need to do it. Computer can all manipulate all the data. So repetitive tasks, all those work went away, but it created new work. So in my view, like you talked about how robotics and everything moving, so that same transformation it's going right now. We are moving more towards robotics, having robots do most of the work. So the way that we transform from manual to computer,
now the industry will move from computer to robotics to do the same work, and it's going to create actually more work for us. Right. Right now we are managing computer, and computer system will be managing robots and robotic system in the future. That's my view. I would like to add little thing, you said chat GPT, right? And then how it will take our job. I think you have to have the idea what you want to do using chat GPT, right? You need to know the prompt, what you are asking and what you know. So, software developer using a Stack Overflow to Google their answers, right? Now you don't have to go to Stack Overflow. You can integrate the chat GPT or Copilot within your project and it can answer for you. Of course, indeed, it will accelerate your working work, right? But it will not take your job away. So just That like is myth. That is myth. yeah, so for example, maybe down the road, maybe in few years, Aditya can create a robotic cook, maybe Nattu Kaka, and then that can help mom. Like Kiran will say, uh, today I want to eat like Indian food or like Chinese food, and the robotics can they'll find the thing and they can cook. Do you think robotics is going that kind of application oriented many tasks? Aditya, what is your like research? What is your thinking about that? Yeah, I mean, I feel like there's actually quite a high possibility that could actually happen. Because I mean, a year ago I was actually working on a project of like cooking, like robots cooking stuff. It was very rudimentary and simple. It was ramen noodles, a robot cooking ramen noodles. Boiling the water, putting the water in the cup, putting the noodles in the cup, and stuff like that. It was very rudimentary, but I feel like later down the road you could make robots that could do tasks that humans do right now, like cooking, for example, as you said. But I think it would take a little bit of time and take a little bit of time for like people to actually accept that, because it's going to be like a huge change, because you wouldn't usually think about cooking as something a robot would do. All right, that's awesome thought. So okay, we are in end of this interview. So at this moment, just say if some other kids wants to contact you, want to learn something, do you have any way you can help out other kids, or do you plan to envision doing something like that down the road? Because because with your knowledge and experience, a lot of other kids can get the interest, and that will be good skill to learn. Because in American life, we are a capitalist society, and you have to generate wealth. And in order to generate, only three things you can do. One is learn the skill that makes good paying job, and then figure out how to save that money what you have earned. And third thing is how to invest. So do you think what are you right now doing anything that you can with your work or some your training, other kids can get help or they can get in touch with you? Do you have any thoughts on that? Yeah, so right now we're running a coding club that's online and in person, which I think, email. Yeah, you can. Yeah, I think the email is apex.us@coderdojo.com. I think you can contact that and get in touch to join that club there. It's like you bring your interest and we help you pursue that. They're like-minded people. It's like a social communication with like-minded people, because all the people there are pursuing similar interests to you. So you can learn from them, they can learn from you, and they can help you grow there. That's a very good place to learn that. I also have a YouTube channel, not very active lately because of school, but I have some previous videos on robotics and coding on there. Code with Aditya, if you want to check that out. But yeah, that's awesome. So Ganeshji, so is there any information you'd like to share? Just somebody right now in Nepal or Janakpur, Viratnagar, wherever, they wants to get some kind of mentorship, or maybe get the idea how to come to US, how to
would be interested to like guide them, or do you have any information, or they can contact you, or like join you, or maybe connect with you in any social media stuff? Would you like to share anything? Yeah. I mean, I'd be very happy to help anybody who wants to either come to US, know more about how the process works, like coming in student's visa from Nepal to here. If they want to know more about Maharishi University, I can help with that. And in general, if they need any like career advice or anything, I'm more than willing to help there. And they can either send me email at shah.ganesh@hotmail.com, or I have public Facebook profile. They can just send me a request. I'll review and accept it. The Kiranji, so basically, I really thank you again at the end. So, you guys are really kind of for our community, kind of power couple, power dual software engineer with the, another small, mini software engineer coming on the way, on the road. So, do you have any thoughts, especially, a lot of, we talk about women empowerment, and you are one of the examples. So, many people are coming right now, more family immigration, those things. Do you have any message to those ladies who come here, especially not very, they don't have probably the software engineering degree or maybe healthcare degree. Instead of working some here, there small jobs, gig economy. Do you have any thought process how they can transform themselves like you as a software engineer, and they can achieve their American dream? Final thoughts for it. Yeah, I think that's a very good question. I think, yeah, how I did, I pursue my degree in education in Nepal, and then I pursue the education in technology here, and then I did not waste my time doing other work. So I thought, okay, let's transform myself, and then I'll get the job of my dream. And then you have to work on yourself, and then your spouse is there to support, right? Even my kid is supporting right now. And then if you have that ambition, you can get that one. And then I think, yeah, the ladies who is trying to pursue the degree in STEM or healthcare, I think that's really good thought. You should do that, and then it will be kind of cumbersome and then struggle in the beginning, but that will pay off down the road. So I think, yeah, if you have any question, if you need any suggestion from me, you can reach out to me, sa.kiran@outlook.com. And then you can search me on the Facebook profile and then send me the request so I can help any way I can. All right. Thank you very much for your time, and I wish you all very happy Vijayadashmi, Ghatastatapana, Navratra, and Diwali Chhat, and look forward to talking to you again. फिर अहाँ सबसे बैठबे and फिर बात करबे. The whole idea is keep healthy and enjoy yourself. Thank you so much. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद. अहाँ बहुत नीक काज कर रहल छी, सब सोसाइटी के जोड़ रहल छी एक ठिमन, एंड देन मैसेज पुया रहल छी, सोसाइटी में स्प्रेड कर रहल छी कि आदमी केना आगाड़ी बढ़े, केना हेल्प होय एनी हुए. इहो जे रहलिए से पार्ट रहले कि केना मैसेज है अपना सोसाइटी में, एंड सोसाइटी के आदमी केना कोनो मैसेज लके आगाड़ी बढ़े, केन उ सब बहुत बड़का बात छै. सब आदमी नहीं कर रहल छी, अहाँ कर रहल छी, एकरा लागि बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत प्रशंसा के काज कर रहल छी. And you have like a very, very good, kid. Aditya, you are like for the kid, many kids, you are like a rock star. Keep doing, and you are making us proud. And keep doing the good work. And we want to see you in the really in national radar somewhere, doing something awesome job. And keep up the, keep doing that thing, and help other people. Okay. Thank you so much. All right. All right. Take care.